Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to continue our current affairs series जिसमें कि we are completing current affairs of past 1 years through 1700 plus MCQs. Now question number first से लेके question number 630 we have already completed. Today we are going to start from question number 631. So without wasting time, let's straight away move to the questions. Under which campaign did the RBI launch its official WhatsApp channel on 12th April? This is the RBI Says app, the RBI Says campaign. Now RBI के बारे में पता होना चाहिए आपको. It has its power under the RBI Act of 1934. अगर आपसे ये पूछा जाए कि when was RBI nationalized? आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? सो 1949 में आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड. ऑन दी अदर हैंड अगर एसबीआई की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1955. ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है स्टेटमेंट बेस में, तो आप इसको ध्यान में रखना. ठीक है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, साथ में मैं आपको स्टैटिक पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे कि आपका रिवीजन स्टैटिक पॉइंट्स का भी बहुत बेटर वे में हो जाएगा. Next is, which former England fast bowler was honored with a knighthood on 12th April? So this is James Anderson. Next, whom did Mohan Bagan Super Giants defeat to win the Indian Super League? This is a football tournament. Okay. So Mohan Bagan Super Giants defeated Bengaluru Fan Club or Bengaluru FC. Next, which country assumed the presidency of Interpol Governance Committee on 12th April 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूएई. इसके एडिशन आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली दिस वाज कंडक्टेड रिसेंटली इन 2025. ये इंडिया में कंडक्ट हुई थी. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा फ्रांस में एआई समिट वाज हेल्ड. AI Summit was held in France, in Paris, जिसमें कि जो चेयर था, the chair of the AI Summit, it was France. And if I talk about the co-chair was India. Okay, this is an important question, पता होना चाहिए आपको. ये additional data भी आपके लिए important है. Next is, who won the Monte Carlo Masters 2025 title? So Carlos Alcaraz ने जीता है Monte Carlo Masters title. In addition to that, Carlos Alcaraz has also won the French Open of 2025. ये भी आप ध्यान में रखेंगे. In addition to that, अगर मैं विंबलडन की बात करूं, so Wimbledon 2025, this was won by Jannik Sinner. Okay, Jannik Sinner. Next देखते हैं, which Kathak dancer and choreographer passed away in Ahmedabad on 12th April? This is Kumudini Lakhia. Now, obituaries में this is important, so you need to know about this. Next is, what was the name of the 4th India-US Tri-Service Naval Exercise held in Andhra Pradesh? Now, this is known as the Tiger Triumph Exercise. ये USA एंड इंडिया के बीच में कंडक्ट होती है. वरुण एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो वरुण इज एन एक्सरसाइज दैट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, इसके अलावा यूएसए के साथ में युद्ध अभ्यास, ठीक है, टाइगर क्लॉ, ये एक्सरसाइज यूएसए के साथ होती हैं कंडक्ट. जापान के साथ में बात करूं तो धर्म गार्जियन जापान के साथ. इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट विथ मंगोलिया. एंड अगर मैं बात करूं रिसेंटली, टैलिस्मैन सैबर एक्सरसाइज. नाउ दिस इज द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, who was appointed as the Director General of NADA? So this is Siddharth Singh Longjam. Who was elected the President of Gabon on 13th April? This is
Bryce Olegiu Nguema, and this is important. Okay. Next, who was reappointed as the chairman of the ICC Men's Cricket Committee? This is Saurav Ganguly. Who received the Virtual Dalit Sahitya Puraskar of 2025? P. Sivakami is the right answer. Next, which two commemorative days were observed on 13th April 2025? So सबसे पहले तो जालियांवाला बाग मैसेकर. This tragic event, it happened on 13th April 1919. मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ इसमें क्या था कि द पीपल ऑफ दैट सिटी इन अमृतसर, दे गैदर्ड अराउंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द illegal detention and illegal arrest of Dr. Saifuddin किचलियो एंड डॉक्टर सत्यपाल. ओके, इसके एवज में अभी हमने नाइटहुड देखा था. ठीक है, नाइटहुड देखा था अभी कि जेम्स एंडरसन को दिया गया था यूके ने नाइटहुड. सो उस टाइम पे नाइटहुड मिला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी को. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था. सो जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर डिनाउंस्ड हिज नाइटहुड. ओके, इसके अलावा 13th अप्रैल को सियाचिन डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व. सो दिस ऑल्सो यू नीड टू नो. नेक्स्ट है, व्हाट नेम was given to the Madhya Pradesh 25th century? So this is the Dr. Bhimrao Ambedkar century. Important है क्योंकि 25th century है. So this is important. And मध्य प्रदेश से आपको ये भी पता होना चाहिए, टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है. इन एडिशन टू दैट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. टॉप 3 के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. लेट अस सी आपने कितना स्टैटिक जीके को रिवाइज किया है. नेक्स्ट इज विच क्वांटम कंप्यूटर वाज लॉन्च्ड बाय QPIAI ऑन द वर्ल्ड क्वांटम डे. सो दिस इज QPIAI इंडस. ठीक है, इंडस से आप इंडिया समझ सकते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पता होगा आपको. सो दिस इज द क्वांटम कंप्यूटर विच हैज़ बीन लॉन्च्ड. नाउ विच स्टेट लॉन्च द भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड. सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, भू भारती पोर्टल बाय तेलंगाना गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन सक्सेसफुली टेस्टिंग लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम. लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम में 4th रैंक है इंडिया का. अगर मैं बात करूं डिफेंस इंपोर्ट्स की, तो इसमें इंडिया का 2nd रैंक है. ठीक है, इंडिया का 2nd रैंक है. नाउ फर्स्ट किसका है फिर, तो फर्स्ट है हमारे यूक्रेन का. ओके, बिकॉज देयर इज अ ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इस वजह से यूक्रेन इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन विच हरियाणा सिटी डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 मेजर प्लांट्स. दिस इज इन यमुनानगर. नाउ लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो इन हरियाणा. हरियाणा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सोनीपत. लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इज इन सोनीपत. नेक्स्ट इज व्हाट मैस्कॉट वाज अनवील्ड by Bihar CM Nitish Kumar for Khelo India Youth Games of 2025. So Khelo India Youth Games 2025 mascot is Gaj Singh. Which rocket carried 6 women including Katy Perry to the upper atmosphere on April 14, 2025? So this was the New Shepard NS-31 rocket. Okay, important है ये आप ध्यान में रखेंगे. Now अब statement based question है, so let us solve some of the statement based question. Now consider the following statement about the Global Justice, Love and Peace Summit. सबसे पहला है कि it was held in Geneva. Second is it was the world's largest peace conference and it took place on 12th April 2025. Now Global Peace, Justice, Love and Peace Summit ये held हुई थी दुबई में and not Geneva. That is why first हमारा incorrect है. Second and third will be the correct answer. Next है regarding the RBI's WhatsApp initiative launched on 12th April.
इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द कैंपेन RBI सेज, अभी हमने देखा था, बिल्कुल करेक्ट है। इट एम्स टू सिंप्लीफाई एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद द गूगल पे। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेशन में इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 and 2 will be the correct answer. Next, consider the following statement about the Apricot Flower Festival. Now, it was held in the Sanjak village, Kargil. Absolutely correct. The festival ran from 11th to 15th April. Absolutely correct. It was organized by the Ministry of Tourism. Now, ये जो फ्लावर्स फेस्टिवल होते हैं ना, इनको कोई भी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं करती है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल दिस वाज हेल्ड इन कारगिल, ठीक है। 1 and 2 is correct. Now, with reference to the Stree Summit of 2025, consider the following. It stands for She Triumphs Through Reforms, Entrepreneurship and Empowerment. So basically थीम थी इसकी है, जो कि absolutely correct है. It was held in Hyderabad. एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई नीति आयोग। सो नीति आयोग जो है वो इस तरह का कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, दैट इज वाई ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ट्रू। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच। नाउ इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, करेक्ट है। फोकस्ड ऑन मिलिट्री पोएट्री एंड स्ट्रेटेजिक राइटिंग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये थर्ड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर इनकरेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्गेनाइज कराया था इसको। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द महिला संवाद अभियान लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 18, 2025। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट एम्स टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, absolutely correct है, and it was launched in collaboration with the UN Women. No, this is not true. महिला संवाद अभियान, this was a sole program of the बिहार गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन बॉडी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दैट इज वाई फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज, now consider the following statement about the Silkyara tunnel renamed in April 2025. Now it is located in Uttarakhand, absolutely correct. It was renamed as the Baba Bauknath tunnel. ये important है पॉइंट आपके लिए, absolutely correct है। Now it connects देहरादून to ऋषिकेश. Now this is not true, ठीक है, हायर माउंटेन साइड में है ये टनल्स। सो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। Now कौन से जगह को ये सिल्कियारा टनल जो है वो कनेक्ट करती है, दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। Now with the reference to the World Heritage Day 2025, consider the following. It was celebrated on 18th April. The theme was Heritage Under Threat from Disasters and Conflict, and it was organized by UNESCO India. Now, first and second is true. UNESCO India ने ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था, so the third statement is false. Next, consider the following statement about IIT Mumbai solar innovations. Now the scientists developed a lotus leaf like solar evaporator, absolutely true. Now it is designed for salt water treatment. अब ये invention जो है, this is important, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। Third is, it was developed in collaboration with ISRO. No, it was solely developed by IIT Mumbai. ISRO का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, so we will यहाँ पे eliminate the third option. First and second हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, sorry, regarding the Indian Defence Honours announced on April 16, 2025, 5 personnel received the MacGregor Memorial Medal. Second is, it is India's oldest military honor and it was awarded by the President of India. So यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, this is not true, ठीक है। प्रेसिडेंट जो हैं वो अवार्ड्स को नहीं प्रेजेंट करते हैं, सो हम थर्ड स्टेटमेंट को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे देखते हैं स्टेटमेंट्स अपने। नाउ, हु अज्यूम द चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी? शिव शंकर रमन,
who was appointed as the MD and CEO of SBI Card? This is Salila Panigrahi. Next is, which of its wholly owned subsidiaries did Aditya Birla Capital merge with itself? ये है आदित्य बिरला फिनेंस. Which state government launched a free bus service for women on 1st April? This is Jammu and Kashmir. Now, what percentage increase was recorded in India's defense export in financial year 24-25? So 12.04% का increase यहाँ पे देखने को मिला था in the Indian exports. Okay. Now next देखते हैं. Who won a gold medal at the Azelhoff CSR Lear Equestrian Competition in Belgium? This is Niharika Singhania. With which country did India celebrate the 75th anniversary of diplomatic relations? China is the right answer. Next is, which Indian women's hockey veteran announced her retirement? So this is Vandana Kataria. Next is, what was the wage hike under Manrega for financial year 25-26? So 7 rupees से लेके 26 rupees तक की हाइक यहाँ पे देखने को मिली थी. Now next देखते हैं. Which state was Sarhul Mahotsav celebrated? Sarhul Mahotsav is a festival of Jharkhand. Which anniversary did RBI celebrate on 1st April 2025? So 90th है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1934 में RBI was established. Next is, which state celebrated the Utkal Divas? Odisha ने celebrate किया था यहाँ पे उत्कल दिवस. Next है, what was the name of the India-Russia maritime exercise? It is Indra. वरुण आपको पता होगा, फ्रांस के साथ है. नेक्स्ट देखते हैं. Which state Rindia silk and Khasi handloom product received the GI tax? So this belongs to Meghalaya. Next है, who won the USA Grand Prix 2025 title? This is Francesco Bagnaia. Next is, what was the theme of the World Autism Awareness Day of 2025? It was moving from survival to thriving. Autistic people share their perspectives. C will be the right answer. Next, the 6th BIMSTEC summit, it was held in Bangkok, Thailand. Okay. Who was appointed as the new president of the Asian Cricket Council? Mohsin Naqvi. Next is, which country assumed the BIMSTEC chairmanship for the next 2 years? This is Bangladesh. Important है आपके लिए, हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. Next is, which country honored PM Narendra Modi with the Mitra Vibhushan? It is Sri Lanka. Next है, consider the following statement about the Indian Military Commanders Conference. Now, it was held in New Delhi. It took place from 1st April to 4th April and it was hosted by the Ministry of Defense and Niti Aayog. Now, Niti Aayog organize नहीं करता है because it is solely related to the defense. So first and second will be right. Question number 681 है, consider the following statement about the GI tax granted on April 3rd. 7 products from West Bengal received the GI tax. Kamarpukur's white bonde and Bairupuria guava were among them. And these tags were granted by the Ministry of Agriculture. Now जो GI tax दिए जाते हैं, this is given by the Department of Industry and Trade, Department of Promotion, Industry and Trade. Okay, Agriculture Department नहीं देता है, Ministry of Agriculture यहाँ पे नहीं GI tax को grant करती है. That is why first and second is right. Next is, consider the following statement about the 6th BIMSTEC summit held in April. It was hosted in Bangkok, Thailand. बिल्कुल करेक्ट है. India assumed the chairmanship for the next 2 years. यहाँ पे second statement false है because अभी हमने देखा था Bangladesh has assumed the presidency. ठीक है. Now the third statement is, the summit focused on the regional connectivity and disaster resilience. So first and third statement here are true. So B would be the correct answer.
Next is consider the following statement about Manoj Kumar. Because it is the name of an obituary, तो ये important हो जाता है आपके लिए. He was a veteran Bollywood actor known for patriotic films. Correct है. Passed away in Mumbai. Correct है. He was honored with the Padma Vibhushan in 2025. So ध्यान में रखेंगे, no Padma Vibhushan was awarded to Manoj Kumar. First and second हमारा correct होगा यहाँ पे. Next is consider the following statement about the breakthrough prize of 2025. This is important. पूछ सकते हैं आपसे. Okay. It is often referred to as the Oscar of Science. Correct है. Dennis Gates Gori won in mathematics, and the award is given by the United Nations. Now this breakthrough prize, it is given by a private organization. United Nations ऐसा कोई award नहीं देता यहाँ पे. That is why first and second will be correct. Now consider the following statement about the new Pamban Bridge inaugurated on 6th April. It is India's first vertically lift railway sea bridge. Absolutely correct है. It connects the Mandapam Island and Rameshwaram in Tamil Nadu. Absolutely correct है. Next, it was inaugurated by the President of India. No, the Prime Minister of India. The Prime Minister of India inaugurated this, not President. So first and second only is right. Next is consider the following statement about India's economic performance in financial year 24-25. Tamil Nadu recorded the highest real economic growth rate. Absolutely correct. The growth rate was 9.69%. Absolutely correct. Maharashtra ranked second with 9.55. No. Bihar का यहाँ पे second rank था. Maharashtra का नहीं. So only first and second here is correct. Now consider the following statement about the Waqf Amendment Act of 2025. Now it was approved by President Draupadi Murmu. Absolutely. Whenever any bill is passed by the House and it is sent to the President for giving assent. So whenever the President gives an assent to a bill, this bill becomes an act. So Waqf bill पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा गया एंड प्रेसिडेंट हैज गिवन हर अप्रूवल एंड इसके बाद ये एक्ट बन गया था. तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. नाउ इट एम्स टू रिफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज. एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड इट वाज पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये पार्लियामेंट पास करता है. सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियरी बॉडी. ओके, जुडिशियरी है. After it becomes an act, the Supreme Court can get into the legality of the act, whether the act is legally valid and not constitutional. So बाद में Supreme Court of India can deal with it, but शुरू में this is limited to the Parliament only. Next is consider the following statement about the Sudarshan Patnayak's achievement. Now he was honored with the Fred Darrington Award. Absolutely correct है. The award was presented at Sandworld 2025 in England, and he is a renowned Indian sculptor specialized in wood carving. So this Sudarshan Patnayak, he is an sand artist. अब देखो यहाँ पे फ्रेड डैरिंगटन एंड सैंडवर्ल्ड 2025 में इनको अवार्ड दिया गया. So सैंडवर्ल्ड से आप समझ सकते हो he is a sand artist and not a wood carver. Okay, first and second true है, third is not correct. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द AI rankings released by the United Nations. Now, India has ranked 10th globally in the AI readiness. Next is India ranked 36th in the Frontier Technologies Readiness Index. And China topped both the rankings. अभी अगर मैं बात करूं करेक्ट स्टेटमेंट की, सो USA ने टॉप किया है, ना कि चाइना ने. सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. What percentage of tariffs did US President Donald Trump announce on imported cars and auto component? 25% tariffs. Next is where was the 10th ammunition cum torpedo cum missile base barge LSCM 24 launched? It was launched in Thane, which is in Mumbai, Maharashtra. Next is according to the Indian Tea Board, which country did India surpass to become the world's second largest tea exporter? So India has surpassed
Sri Lanka. On whose 1009th birth anniversary did the Department of Post release a commemorative stamp? So this was on the Mata Karma. What was the name of the Indian Army's tri-service integrated ward exercise held in Arunachal Pradesh? So the name was Prachand Prahar. Now, which state topped the medal tally at the Khelo India Para Games in Delhi? So Haryana has topped this list. Who was appointed as the managing director of DBS Bank India? So this was Ambuj Chandana. Who took oath as the new Chief Justice of the Odisha High Court? So the correct answer is Justice Harish Tandon. Who became the first Indian woman to enter the top 10 of the Hurun Global Rich List of 2025? This is Roshni Nadar Malhotra. Now, which tourist submarine sank off the coast of Hurghada in the Dead Sea, Egypt? So the name of the ship was Sindbad. Which NBFC appointed Jasprit Bumrah as its brand ambassador? This is L&T Finance. Now, which city surpassed Mumbai to become Asia's billionaire capital in the Hurun Global Rich List of 2025? So ये है हमारी Shanghai. Next is, what is the name of the cooperative app-based taxi service launched by Amit Shah? So the name is Sahkar. Next है हमारा, where did the Ministry of Information Technology organize India's first nanoelectrics roadshow? So this was in ISSC Bengaluru, and this one is important, okay? Next है, what was the theme of the World Theatre Day 2025 celebrated on March 27th? It was Theatre and a Culture of Peace. What is the name of the water conservation app launched by the Uttarakhand government? This is Bhagirathi. ये important है specifically for the UK PSC examination. Next, which two infrastructure projects in Bihar were approved by the central government? So this was Patra Ara Sasaram corridor, Kochi Mechi link. Now, who was appointed as the chairman of the Indian Bank Association? So this was C.S. Shetty. Next, who was appointed to the advisory board of the Australia-India Relations Center? This was Steve Waugh. Next, whose book titled The Great Conciliator Lal Bahadur Shastri and the Transformation of India was released? So संजीव चोपड़ा ने इस बुक को लिखा है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 710. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज टी एक्सपोर्ट इन 2024. पहला स्टेटमेंट है इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर. नो, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इज केन्या. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट बिकॉज थर्ड की मैं बात करूं तो श्रीलंका है. रिसेंटली इंडिया हैज ओवरटेकन श्रीलंका टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड है इंडिया सरपास श्रीलंका इन द ग्लोबल रैंकिंग्स. करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है केन्या वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द टी एक्सपोर्ट. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025. पहला है इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली. सेकेंड इज हरियाणा टॉप द मेडल टैली. थर्ड इज महाराष्ट्र सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन, सेकेंड प्लेस. सो यहाँ पे 1 and 2 is right. Consider the following statement about the submarine incident in Egypt. The Sindbad submarine sank in the Dead Sea. This is the first statement. Second है the incident occurred near Hurghada and it was a military submarine. तो जो सिंहबाद थी this was a tourist submarine, not a military one. So third statement यहाँ पे गलत है. Only first and second is true. Next है consider the following statement about the Nanoelectrics Roadshow. It was organized by Ministry of Information Technology. Absolutely correct. Second है it was held at IISC Bengaluru. Absolutely correct. Third one is it is focused on quantum computing. No, this is incorrect because यहाँ पे as the title mentions Nanoelectric Roadshow है ये, not on quantum computing. So only the first and second here is true.
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुक द ग्रेट कंसिलिएटर. नाउ इट वॉज रिटन बाय संजीव चोपड़ा. Next is it was based on Lal Bahadur Shastri's leadership, and third is it was released by Prime Minister. So the third statement is incorrect. ठीक है. Next है consider the following statement about Amit Shah cooperative initiatives. First one is he launched the Sahkar taxi app. Now this is for cooperatives, so absolutely correct है. Second is he inaugurated a makhana processing unit in Darbhanga, which is in Bihar. This one is also absolutely correct. And third one है he unveiled a statue of Maharaja Agrasen in Hisar. So all the three statement here are absolutely correct. So all of the above हमारा यहाँ पे आंसर होगा. D is right. Next है consider the following statement about the Indian Open. सबसे पहला है it was held in Mumbai. Correct. अनाहत सिंह won the women's single title. ये भी correct है. एंड थर्ड है शरद कमल वॉन द मेन सिंगल टाइटल. नो, मेन सिंगल टाइटल शरद कमल ने नहीं जीता था, करीम अल टोर्की इन्होंने जीता था. ठीक है. सो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट्स इन म्यांमार. फर्स्ट है स्टेटमेंट हमारा अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन म्यांमार एंड थाईलैंड ड्यू टू अर्थक्वेक. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर द रिलीफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड है द ऑपरेशन वॉज लेड बाय इंडियन नेवी. सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये जनरली इंडिया की गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन मिशन किया था, नेवी वगैरह ने नहीं किया था. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज ट्रू. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हुडुन Global Rich List of 2025. First है Shanghai became Asia's billionaire capital. Absolutely correct. Next है रोशनी नादर मल्होत्रा entered the global top 10. Absolutely correct. And Gautam Adani topped the global list. नहीं. The third one is not correct. First and second is true. यहाँ पे Shanghai का नाम आप ध्यान रखना. The Shanghai is the billionaires capital. Okay. So first and second हमारा यहाँ पे correct होगा. Next is consider the following statement about the GI tag announcement on March 31st. First is Varanasi received GI tag for 8 cultural and food items. Second है Uttar Pradesh become the top state with the 69 GI tags. Third is Tamil Nadu ranked second with 65 GI tag. सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ जीआई टैग्स की तो वो यूपी के पास है एंड सेकंड लार्जेस्ट इज तमिलनाडु. सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. ऑन मार्च 19th विच मिशन वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट ग्रोथ इन द लाइवस्टॉक सेक्टर. दिस वॉज द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है Where was the multilateral naval combat exercise Sea Dragon hosted by the US? So it was hosted in Guam. ठीक है. Next देखते हैं. What is India's rank in the global pharmaceuticals export as per data released on March 19th? So global pharmaceuticals exports में इंडिया का 11th rank है. Next है which major naval exercise was concluded by the Indian Navy? So this is the tropics exercise and it was one of the largest naval exercise. So ये important हो जाता है आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए. This question is very very important. Next is according to the RBI data which countries became the top source of remittances to India? Very very important. Top sources of remittances यहाँ पे अमेरिका एंड यूएई है. ठीक है. ब्रिटेन भी है एंड यूएई भी है. Next is which country honored actor Chiranjeevi with the Lifetime Achievement Award? So Britain ने honor किया यहाँ पे. Next है who was awarded Denmark's Knight Cross of the Order of the Dannebrog? So this is Vijay Shankar. Next है where in Assam was the Brownfield Ammonia Urea Complex Namrup 4? Now this is important. Okay, Namrup 4 नामरूप में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है. नेक्स्ट इज
Prime Minister Christopher Luxon visited India. He is the PM of which country? So he hails from New Zealand. Next, which state became the first in India to establish a senior citizens commissions? This is Kerala. Next is, who was elected as the first female and African president of the International Olympics Committee? This is Christy Coventry. Next, which silk produced from the northeast India received the OECO-Tex certification from Germany? This is the एरी सिल्क. ठीक है, मेघालय की है ये एरी सिल्क. ठीक है. नेक्स्ट है, which Bollywood actor was made the brand ambassador by Tata Motors? This is Vicky Kaushal. Next है, what was India's rank in the World Happiness Report 2025? So World Happiness Report में इंडिया का रैंक 118th है. नेक्स्ट देखते हैं, who won the 2025 water prize for contribution to the hydrology? So this has been recently given to Gunter Bloschel. नेक्स्ट है हमारा, what was the theme of the World Poetry Day 2025 celebrated on March 20th 2025? This was poetry as a bridge for peace and inclusion. important है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, who represented India at the 69th session of the UN Commission on the Status of Women in March? So Annapurna Devi is the correct answer. Next, which state launched a mobile app to bring transparency in police transfers? So West Bengal has recently launched such type of. Now, who was appointed as the MD and CEO of the IFCI on March 21st? So recently अभी राहुल भावे हैं. Okay. Now next है, which state has announced the Ganga Sharda River Corridor to promote religious tourism? उत्तराखंड ने अभी recently announce किया है. Now next is, consider the following statement about the naval exercise Varun 2025. Now it was a bilateral exercise between India and France. Absolutely correct. It was held in Arabian Sea. Absolutely correct. And ये मार्च में कंडक्ट हुई थी. Absolutely correct. So all of the above statement are correct. Next है, consider the following statements about the Kabaddi World Cup 2025. It was organized in England. Correct है. It concluded on March 23rd. Absolutely correct. And India did not participate in the tournament. Third statement is incorrect because Kabaddi World Cup का winner ही यहाँ पे India है. Okay. So 1 and 2 is right. Now consider the following statement about the 59th Gyanpith Award. It was awarded to Vinod Kumar Shukla. बिल्कुल correct है. He is a renowned Hindi writer. बिल्कुल correct है. And the award was presented by the President of India. Okay. So the Gyanpith Award is not given by the President. So third statement incorrect है. First and second is true. Next, consider the following statement about the AI chatbot Sarthi. First one is, it was launched by the Haryana government. Correct है. It was designed for citizen services. Absolutely correct. And it was developed by Niti Aayog. So third statement यहाँ पे incorrect है. नीति आयोग की involvement नहीं थी यहाँ पे. So only the first and second statement here is correct. Next is, consider the following statement about the National Ramayan Conference. It was held in Colombo. It was organized by Ministry of Culture and it's focused on Ramayan's influence in Southeast India. So यहाँ पे only the first and third statement is true. Ministry of Culture ने organize नहीं कराया था ये. Next है, consider the statement about the missile tested on March 26. It was a vertical launched short range surface to air missile. Absolutely correct. Tested by DRDO and the Indian Navy. Absolutely correct. And the third statement is, it was launched from INS Vikrant. So third statement हमारा incorrect है. ठीक है. First and second here is true. Next is, consider the following statement about the Sangeet Natak Academy Kathak Mahotsav. First one is, it was the 37th edition. Second is, it was held in New Delhi. And third is, it focused exclusively on Odissi dance. So exclusively Odissi dance पे focus नहीं था. कथक महोत्सव था, तो कथक के ऊपर में emphasis था, not Odissi. That is why third statement हमारा incorrect है. First and second here is true.
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झज्जर बछौली लेपर्ड सफारी. नाउ इट वाज अनाउंस्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट. करेक्ट है. लोकेटेड इन श्री अनंतपुर साहिब. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड थर्ड इज इट इज इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी. ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव बालपन की कविता. नाउ it was launched on March 26th. Correct. Next is it aims to preserve India poems and rhymes for children. ये भी correct है. And it is part of the national education policy. No, this is not true. ये एक separate initiative है. So first and second ही हमारे यहाँ पे correct होगा. Next है under which project did the central government approve ropeways to Kedarnath and Hemkund Sahib? This is the Parvatmala project. Next है where did Draupadi Murmu inaugurate the second edition of Amrit Mahotsav of Diversity? So Rashtrapati Bhavan में it was inaugurated. Next है who was awarded the lifetime achievement in education through hospitality and technology? This was given to Dr. Suborno Bose. Next है who was appointed as the first woman law secretary of India? This is Anju Rathi Rana. Important है ये, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, important है. Who won the ACM AM Turing Award 2024, also known as the Nobel Prize of Computing? So this has been won by Andrew Barto and Richard Sutton. Next है which legendary Australian batsman retired from one-day cricket? Steve Smith. Next है which app was launched by the Uttar Pradesh government to improve the child immunization? This was the RISE app. ठीक है, Rapid Immunization Skill Enhancement. Next is what is India's rank in the global wealth ranking according to the wealth report? So wealth report के according India की यहाँ पे 4th rank है. Next है which theme was adopted for the World Sustainable Development Summit held in Delhi? So the theme was partnership for accelerating sustainable development and climate solution. B is the correct answer. Next है which airline became the world's second largest in seat capacity after Qatarways? So Indigo. Which state launched the project Hifazat strengthening women and child safety? This is Punjab. Important scheme है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. ओके. नेक्स्ट है which Indian woman won the Ramsar Award in Wetland Wise Use category? So this is Dr. Jayashree Venkatesan. Now, which bank launched the Asmita Digital SME loan for women entrepreneurs? SBI ने launch किया है. Next is according to the IQ Air data released on 8th March, which is the most polluted city in the world? So Burnihat in Meghalaya is the most polluted city. Next है हमारा which film won the best film at the 25th IFA Awards held in Jaipur? So Laapata Ladies is the correct answer. Question number 765. Which national park in Madhya Pradesh was declared the 58th Tiger Reserve of India? So this is Madhav National Park. ठीक है, Madhav National Park is the correct answer. Next है which airport was recognized as the best in Asia Pacific for serving over 40 million passengers? So this is the Delhi International Airport, also called the IGI Indira Gandhi International Airport. Next देखते हैं what is the name of the satellite announced by the Assam government? So this was AssamSat. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे वो पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने रिसेंटली अभी खुद की सैटेलाइट लॉन्च किया है. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज which new space telescope was launched by NASA recently? So this was Sphere X. ठीक है, ये भी 768 is also a very important question. Next है which country honored PM Narendra Modi with its highest civilian award? Mauritius ने भी recently highest civilian award यहाँ पे दिया है. Okay, now with this the today's class is finished.
100+ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इस क्लास में। ओके, नाउ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसके पहले के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक टू सी ऑल द वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। सो यू कैन कवर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओनली। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके डू सपोर्ट द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।